Hey guys, Beast again from Geek Guys. As all of you probably know that India is being affected by the COVID-19 really hard in this month and like in this period to be exact. So there are a list of like fundraisers that I have mentioned in the description, so you can donate at your own capacity, and please make sure that you help the cause and let our country recover as fast as possible so that we can just defeat this virus. So now let's start with the tech news. सो एप्पल का जो 20th अप्रैल को इवेंट हुआ था फॉर द न्यू स्प्रिंग लोडेड इवेंट, सो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स थे आई मैक्स, आई पैड एंड द न्यू आईफोन एज वेल, सो दीज ऑल आर अप फॉर ग्रैब. सो अब जो है उन्हें ऑर्डर कर सकते हो एंड दे विल बी डिलीवरिंग रियली सून. सो दे आर अप फॉर ग्रैब्स एंड आफ्टर रिलीजिंग दोज एयर टैग्स, सो उसके बाद जो टाइल कंपनी है जिसने ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट लेके आई थी फॉर द लाइक एक्टिविटी द ट्रैकर और समथिंग, सो उस कंपनी ने जो है एप्पल को स्यू कर दिया फॉर लाइक एंटी कॉम्पिटिटिव लॉज. बट इन काउंटर एक्ट एप्पल ने अपने एंड से डिस्क्रिप्शन दी है कि दे हैव आस्क्ड टाइल टू लाइक यूज देयर इकोसिस्टम, देयर एप्पल नेटवर्क, फाइंड माई नेटवर्क टू लाइक indulge to use the Find My Network by Apple, but Tile instead is going for a law battle with Apple. तो Redmi का K40 जो है कि उनका गेमिंग फोन था, जो गेमिंग सेंट्रिक फोन आने वाला था बेसिकली उनका, वो Dimensity 1200 चिपसेट के साथ आने वाला था एंड इट वाज लाइक ऑन अ फ्लैश सेल एंड इट वाज लाइक आउट इन स्नैप्स. सो काफ़ी सारे यूनिट्स जो हैं उन्होंने बेचे हैं उस फ़ोन के एंड प्रोबेबली दे आर सेइंग कि ये जो है एक पोको फोन F3 के रूप में इंडिया में आएगा. And we don't know if it is going to be, but looks like it is going to be, क्योंकि ये एक Redmi brand है, so Poco is relatively marketed towards the budget segment and I see it happening, but I'm not sure about it. So talking about Xiaomi और Samsung जो है दोनों कोलैबोरेट करके एक नया SoC डेवलप कर रहे हैं जो कि Cortex के अभी अनरिलीज्ड X2 कोर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा and it is going to use the Mali GPU. So this is going to be the custom thing from Xiaomi. It is like their second attempt probably because they have like one of the past, I think so MI5 में उन्होंने यूज़ किया था अपना एक उनका कस्टम चिप. सो दिस इज गोइंग टू बी जस्ट देयर सेकंड अटेम्प्ट. सो ग्रीस और न्यूजीलैंड जो है अब अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के थ्रू जो है अपने जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको अर्थक्वेक वगैरह के अलर्ट्स भेज सकते हैं. दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन चाइना बाय Xiaomi. सो Xiaomi का हर एक गैजेट फ्रॉम टीवी टू स्मार्टफोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाइक बिलियन ऑफ थिंग्स, सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अलर्ट कर सकती हैं पर्सनस को एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन ग्रीस एंड न्यूजीलैंड एंड इट इज़ ऑल over Android, so it is a really wide ecosystem. So we all know Telegram is a like relatively popular chatting app. So अब जो है Telegram ने Zoom like conference calls भी उसमें शुरू कर दी हैं to like compete with the Zoom boom. But I think so that Zoom is quite a dedicated platform and Telegram is relatively on the personal side of things. But personally, I don't think so that it is going to make a dent in the Zoom's business. Apple का एक ex-executive Eddie Q ने एक hint दिया that they were going to release the iMessage platform to Android, but जितने भी big shots थे Apple ने उन्होंने उनको मना कर दिया. They do not have to release that because this was one of the key features of iOS at that time and still to date it is one of the things that is like differentiating between the both ecosystems. And yeah, it was abandoned by Apple. तो Asus का Zenfone 8 जो है वो रिलीज होने वाला है जल्द ही, बट दे आर स्पिलिंग देयर बीन्स ऑल ओवर द प्लेस. ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वो पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा एंड इट विल बी रिटर्निंग विद द हेडफोन जैक. सो दे आर ट्वीटिंग अगेन एंड अगेन अबाउट द लिटिल थिंग्स ऑफ दैट फोन, बट आई थिंक सो हेडफोन जैक रिटर्निंग इज अ रियली ग्रेट डील. सो AMD पुश्ड आउट देयर डाटा फॉर लाइक द Q1 ऑफ 2021. सो उनके रेवेन्यूज हैं, दीज आर लाइक all time high and it should be because they are like selling CPUs like they are hotcakes and yeah, Apple is also up in their revenue game and they are like floating in cash. Another Apple news, Apple ने जो है अपना iOS 14.5 को पुश कर दिया. That was one of the major updates of the 14 version of iOS because this has the anti-tracking feature जो कि Facebook के साथ काफ़ी फाइट हो रही थी Apple की, and it also has something like unlocking your phone with the watch और dual 5G console के जो जितने भी आपके PS5 हैं and Xbox series, so both are compatible now with the iOS devices that are
लाइक वे बैक फ्रॉम द iPod 7 जनरेशन और iPhone 6s तक को ये जो अपडेट है दी इट इज़ compatible. So it is a really big chain of devices that are compatible with this update. So Spain is pinning down companies to require giving 2 years of warranty for each and every device, and this is a really good deal क्योंकि अगर 2 years की warranty होती है that will like extend the device lifespan quite a bit, because अगर 1 साल में कुछ भी खराब होता है, so if it get replaced, so the device probably is going to live 1 more year. but अगर 2 साल की warranty है, so 2 साल के अंदर कुछ भी major component अगर खराब होता है, so I think so 1 year more lifespan we can expect out of a device. So that is a really good thing if it gets passed. And just after Apple, जैसे ही Apple ने अनाउंस किया कि पॉडकास्ट के सब्सक्रिप्शन शुरू होने वाले हैं, so Spotify ने भी अपने एंड से सब्सक्रिप्शन जो है वो शुरू कर दिए हैं. So Spotify owns one of the most popular podcast app, that is Anchor. So Spotify भी अब जो है एक प्रीमियम टियर ले आया है, and it is going to like charge you for that, and it is going to be subscription based. Talking about Apple का जो M2 चिप है, जो कि उनका नया मैक्स के लिए चिप आने वाला है, दैट हैज़ एंटर्ड मास प्रोडक्शन एज स्टेटेड बाय द लीक. सो ये सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में प्रॉब्ली आने वाला है, एंड M1X इज गोइंग टू बी लाइक रिलीज्ड इन लाइक सेकेंड क्वार्टर आई थिंक, क्योंकि उसके भी काफ़ी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं, एंड I don't see it not happening anytime soon. तो गूगल और सैमसंग का एक काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन रहा है अपने एंड से सॉफ्टवेयर्स के बीच, एंड दैट हैज़ लाइक एक्सपेंडेड फर्दर मोर, क्योंकि गूगल मैसेजेस का एक अपडेट आया नया ऑन द सैमसंग S21 दैट गिव्स इट लाइक One UI 3.5 लुक, क्योंकि उसमें जो है वो पूरा मैसेजिंग ऐप जो है वो थोड़ा नीचे को आ जाता है. दैट इज़ लाइक वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द One UI. सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड रियली ग्रेटली ऑन द S21, और काफ़ी जो रिलेटिवली हाई एंड डिवाइसेज हैं सैमसंग के, उसमें भी ये जो फीचर है इट इज़ लाइक ट्रिकलिंग डाउन. सो या इट इज़ लाइक will trickle down I think so to the One UI 3.0. So talking about releasing something, Microsoft has also released their Office and its OneNote app on the Amazon's Fire OS, that is basically on their tablets. So उनके जितने भी अब Fire tablets हैं उनमें आप Office use कर सकते हैं, and OneNote also, and especially they have released their newer generations of tablets just right now, that is like 10 inches and something, and उनके जो प्रोसेसर्स हैं उन्होंने अपग्रेड कर दिया. आई थिंक सो मोस्टली उन्होंने क्लॉक स्पीड जो है वो चेंज किया है, एंड yeah, basically those are the same tablet. Nvidia is not stopping their crypto mining like battle. So अब जो है उनके नए जो PCB आने वाले हैं of their new 3000 series GPUs that they are producing. So उसमें एक hardware based जो है लिमिटर होगा जो कि unhackable होगा as they say, because उनका जो पिछला hacking opinion था about using their like software to hack it, it was not working, because mostly सबने उसको जो है they were bypassing it and they were crypto mining at full rate. So the PCB design is now going to be altered so that they are going to stop the crypto mining on the gaming specific cards, because they are eventually like churning out GPUs dedicated for crypto mining, and yeah, they want to get some revenue out of that also. So Riot Games, जो कि Valorant की parent company है, they are now starting to record your voices that you are using in the voice chats. Their excuse for that was like they are recording this because there are a lot of toxic arguments on the voice chat. So they said कि वो recording तभी सुनेंगे अगर किसी जो player है उसे report किया जाता है. But it is kind of a creepy कि आपकी game recordings जो है these are done on a server and these are stored somewhere, that your voices are stored. Like I have listened to my voices on the Google Home and as well as on the Alexa, and it sure feels like creepy. So Roku ने अपने ऐप स्टोर से YouTube TV और YouTube ऐप को दोनों को ही रिमूव कर दिया, because YouTube was forcing Roku to adopt the AV1 decoder, और काफ़ी सारी अलग पॉलिसीज जो हैं Roku ने अपने एंड से बताई हैं that they were forced by YouTube to adopt. But YouTube has denied all of those. But I think so AV1 will be one of the things that YouTube will be forcing, क्योंकि AV1 जो है YouTube भी अपने end से implement कर रही है, and it will be like really good if AV1 is present on the hardware level for the devices. So Samsung का Unpacked event था जिसमें उन्होंने अपना most powerful Galaxy जो है वो रिलीज करना था. They released a bunch of laptops. दो उन्होंने laptops रिवील किए जो कि 13 इंच और 15 इंच है, और उनका उन्होंने एक Galaxy Flex भी जो है रिलीज किया, that is a convertible laptop. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग वॉज द ऑडिसी बुक, क्योंकि इसमें जो है RTX 3050 जो ग्राफिक कार्ड है वो उन्होंने रिलीज किया, एंड दिस इज नॉट ऑफिशियली बीन रिलीज बाय एनवीडिया. सो ये एक जो है इट वाज लाइक अ साइलेंट लॉन्च ऑन द सैमसंग एंड, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट गेमिंग CPUs दैट इट वाज लाइक गोइंग ऑन लाइक लीक्स अगेन एंड अगेन, एंड
I'm not doubting it कि ये जो 3050 Ti है, it is not going to perform because it is one of the graphic cards that I was personally eyeing on. So let's see what the performance turns out to be. Zen 5 architecture already ही काफ़ी जगह जो है वो like it is in the fumes. So ये जो architecture है it is going to be on the 4 nanometer. और जो मोस्टली जो इसके लीक्स आ रहे हैं दैट आर लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट हैविंग अ हाइब्रिड सिस्टम, जैसे कि जो मोबाइल सीपीयूज होते हैं इसमें 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं और 4 जो हैं लो परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, सेम एज द लाइक द M1 Max, उसमें भी जो है 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 4 जो है वो लो परफॉर्मेंस कोर्स हैं. तो दीज आर लाइक एम टुवर्ड्स दैट सेम हाइब्रिड आर्किटेक्चर, बट इसमें जो है 8 कोर्स जो हैं अप टू दीज आर गोइंग टू बी परफॉर्मेंस कोर्स और 4 जो हैं वो पावर एफिशिएंसी कोर्स होंगे. एंड इट बीइंग ऑन द 4 नैनोमीटर इज गोइंग टू लाइक improve the efficiency further on. Especially Intel के जो Alder Lake जो आने वाले CPUs हैं, these are also rumored to have like this hybrid system. So this is going to be interesting कि ARM की बुक में से एक चैप्टर जो है these both AMD and Intel are using and what the performance is going to be out like in the open. So Washington DC में एक पुलिस के database को ransomware का एक अटैक हुआ and the hackers like are threatening and they are threatening कि वो जो confidential names हैं जो कि informers हैं उनके, these names are going to be revealed to the street gangs and it is really a bad thing that पुलिस database जो है वो hackers hack करें. And this is not a really ethical thing. Any attack is not ethical, but this is seriously like a very cheap shot. So Windows 10 again. So Windows ने अपने end से एक जो है छोटा patch अपने end से issue किया था. That was like really getting to the nerves of the gamers because जिसके पास भी multi monitor setup था, it was like ruining their PC and their PC were performing like more worse than they are actually going to perform, and especially multi-monitor setups were like ruined by this patch. और अपने end से Microsoft ने नया patch जो है वो release कर दिया है. So make sure if you are having some difficulty, make sure that you update your Windows 10 ASAP. The world's fastest refresh rate monitor that I know is like 360 Hz, but Acer has like crossed it and now they have released their XV2. So this is a monitor that is capable of 390 Hz of refresh rate. I think so that CSGO on this would be looking like sweet. This is a monitor जिसका एक refresh rate जो native refresh rate है वो 360 Hz ही है, but the panel can be overclocked to 390. So there is that. If you can overclock it, go ahead and overclock it to 390 Hz. So guys, that was it for this week's tech news. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like and subscribe to my channel. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.